Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. This is your science class and I am your science teacher. Today we will learn unit number 7 that is taken from your amazing science book 3. The title of unit number 7 is Force. In our previous lecture we have learnt about water, water cycle, types of moisture in the atmosphere and uses of water. So students, will you please tell me how do we use water? We use water in different ways. We use water for drinking, washing, cooking, bathing, boating, and sailing. Moving towards today's lecture, that is all about force. So here we have a question that what is force? A push or pull is basically a force. In this picture, you people can see here we have a cart and a girl is pushing the cart and the boy is pulling the cart toward itself. So we can say force is required to move things. Force is required to stop the moving things. It means अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है और हमने उसको मूव करवाना है तो भी हमें पुश या पुल करना पड़ता है. इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. Here we have different examples of force. When we push a toy car, kick a ball, lift a heavy bag or blow up a balloon, we are either pushing or pulling. हमारे पास यहाँ डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स हैं फोर्स की. इन फर्स्ट पिक्चर यू पीपल कैन सी एक जो बेबी है वो टॉय कार को पुश कर रहा है. इट मीन्स ही इज अप्लाइंग फोर्स. इन सेकेंड डायग्राम यू पीपल कैन सी अ बॉय इज किकिंग अ बॉल. एक जो बॉय है वो बॉल को किक कर रहा है. इट मीन्स कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. In third picture, you people can see a boy is blowing up a balloon. एक जो बॉय है वो बलून ब्लो कर रहा है. इन तीनों डायग्राम्स में अगर देखें तो या तो पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है. सो वी कैन से दैट अ पुश और पुल इज अ फोर्स. What does force do? Force can do many things. Force can change the direction of moving things. Suppose you are playing a football and football is coming towards you. You can kick a ball, it will change its direction. So we can say that force can change the direction of moving object. Force can break things. In this picture, you people can see by applying a force, we can break a wooden ruler or we can break things. Force can stretch. In this picture, you people can see force can stretch things. If we pull a rubber band or a piece of elastic, it becomes longer. Force can bend things. In this picture, you can see by applying force, a wire can be bent. Our next topic is work. If we want to move something, we have to apply force. It means we push or pull it. When an object covered some distance, we call it work. Work is done when push or pull makes something move. When we do work, we need a force. Without force, we cannot able to do work. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मीन्स जब भी हम किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, इट मीन्स कि वर्क हुआ है. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी नीड फोर्स टू डू वर्क. सो द फोर्स विच वी नीडेड टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. Machine uses an energy to do work. Without energy, कोई भी मशीन काम नहीं करेगी.
In this diagram, you people can see here we have a crane machine. Crane machine has energy so that this machine can able to lift up heavy loads. अगर इस मशीन के पास एनर्जी नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा जिससे इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये हैवी लोड्स को लिफ्ट अप नहीं कर पाएगी. Forms of energy. Here we have different types of energies: solar, heat, electrical and light energy. Solar energy. Energy coming from the sun is basically solar energy. Plants use that energy to make their own food. Our next energy is heat energy. Heat energy comes from burning of things such as wood, coal, gas and oil. Talking about electrical energy is made in power stations. It can make things move. Here we have example of a fan. With the help of electrical energy, the fan can able to move. Light energy. Light energy can be get from sun, burning of things like candle. Force of gravity. What happens when we throw a ball up in the air? It falls down. If you catch the ball, you can feel a force that pushes your hand towards downward. So students, have you ever feel that force? The force which pulls the object towards the earth is basically force of gravity. कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हो, जैसे लेट्स सपोज कि आपके हाथ में बॉल है, वो आप ऊपर की तरफ उछाल रहे हो और जब आप उसको कैच करते हो तो आपको फील होता है कि आपके हाथ पे प्रेशर पड़ा है, फोर्स लगी है और आपका जो हाथ है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. और अगर आप उस बॉल को कैच नहीं कर पाते तो आप देखेंगे वो बॉल जो है वो अर्थ की तरफ खींची चली जाएगी. तो इस तरह की फोर्स जो कि हर चीज़ को अर्थ की तरफ खींचती है वो बेसिकली क्या होती है? ग्रेविटी कहलाती है. द अर्थ इज राउंड बट थिंग्स डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ. अर्थ इज राउंड but the force of gravity pulls everything towards itself. Force of friction. The force which slows down or stop a moving thing is basically force of friction. If you rub your hands together for several seconds, you will notice that your hands feel warm. That warmth is caused by a force of friction. In this picture, you people can see that a person is rubbing his hands. Friction is necessary to write on the paper. Friction is necessary for walking. If there is no friction, it means we cannot able to write or walk. Friction can be harmful. When the moving parts of a machine rub against each other, they wear out. Tires of a car, shoes and or clothes also wear out due to friction. जिस तरह किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं इसी तरीके से वो चीज़ हार्मफुल भी होती है. अगर फ्रिक्शन रोड एंड टायर्स के दरमियान ज़्यादा हो जाए तो वो टायर रप्चर भी कर सकता है, वो टायर फट भी सकता है. Friction slows down the speed of moving object. So in some cases we need to reduce that friction. We put oil on the moving things or moving parts of a machine. Oil makes the parts of machine slide over each other and there is less frictional force between them. तो जो ऑयलिंग है वो बहुत अफेक्टिव वे मानी जाती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. अब जब मूविंग पार्ट ऑफ मशीन पे ऑयल पड़ जाता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करने लग जाते हैं उसके ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट मशीन. यूज़ बॉल बेरिंग्स. अनदर वे to reduce a friction is use of ball bearings. That was it for today's lecture. Thank you students for listening me. Allah Hafiz.